टॉक्सिक इफेक्ट्स है. That is not pharmacological study. If you are able to convey the difference between the toxicological study and pharmacological study, dynamic drugs. Here आपको मालूम है the dose of toxicology very large amount of drug है. उसी में रिजल्ट भी मालूम है बहुत ज़्यादा मासिव इफेक्ट है, मे बी लीड्स टू डेथ. हम सेम ड्रग का हमने फार्माकोलॉजिकल प्रूविंग है, फार्माकोलॉजिकल स्टडी है, वी कैन यूज दैट पॉइजन टू ड्रग. हमारा पोसोलॉजी हम पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, उसी टाइम वी कैन कन्वे, वी कैन एक्सप्लेन द रोल ऑफ केमिस्ट्री एंड रोल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सेम ड्रग बाय द only by reducing the dosage. Same drug, if you teach them the toxicological effect, same drug teaching the pharmacological effect of drug, we can easily explain why we are teaching the, why we are explaining how we can easy to explain the concept of posology. अब पैरासिलस बताया, आपको मालूम है लार्ज डोसेस किल्स, आपको मालूम एवरीथिंग इज पॉइजन, नथिंग विदाउट पॉइजन, एंड द डोसेज मेक द डिफरेंस. Then the toxicology, pharmacology, then we can leads to dynamic drugs. How we explain the dynamic drugs to students? हम बताएगा बच्चा को, स्टूडेंट्स को बताएगा शुरू से में बीमारी होने का रीजन. हमने पता हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन भी आप लोग पढ़ा है, हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन पता बीमारी का क्या रीजन है, ओनली द कर्स ऑफ गॉड है. बाद में हमने बताया नहीं है, उसके बाद बड़ा बड़ा ऑर्गेनिज्म से हम देखे, पैरासाइट से, बड़ा बड़ा हेलमिन से, पैरासाइट से. उसके बाद हमने किया था, हमने मलेरियल पैरासाइट हमने देखा, मलेरिया देखा, उसके बाद बताया बैक्टीरिया आ गया. देखो स्टार्टिंग फ्रॉम बड़ा सरपेंट्स, देन छोटा हो गया हेलमिन्स, उसका छोटा हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके छोटा हो गया वायरस, उसके छोटा प्रोटीन पार्टिकल्स. द डेवलपमेंट सीवियर से डिसीज का सीवियरिटी ज्यादा हो रहा है, बट ऑर्गेनिज्म साइज छोटा हो रहा है. Same way from toxicology, then pharmacology, then dynamic drugs. कोई बड़ा था, छोटा था, और छोटा था, बहुत कम है. This way we can explain students. Minuteness is not the point. It's not the criteria to fix the effect of drug. हनीमैन उसी में बताया, हमने फिलोसफी में आ जाए, हनीमैन बताया we can try to compare our system with the फ्रॉम स्टडिंग मैथमेटिक्स. कितनी डेसिमल करने के बाद भी आपका मालूम है उसी में एक्चुअल सब्सटेंस है. डेसिमल आप लिखो, पॉइंट है, 0.0 है, 0.001 है, 0.0001 है, 0.003, उसके बाद भी 1 उधर है. सो द इफेक्ट ऑफ ड्रग वी कैन एक्सप्लेन. फॉर मेकिंग ए चेंज वी नीड वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ ड्रग सब्सटेंस. वी कैन एक्सप्लेन स्टूडेंट्स by study understanding the effect of toxicology on life, same drug का pharmacological action on drug, same drug का potentized form का drug है. So in that way we can use the knowledge of chemistry to the student. Then complex biological system, मैंने वो बताया था, पहले बताया था, हमारा मेडिसिन का एक्शन we can expect only in living body. In vivo vitro study बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहे हैं हम, but very clear डायनामिक ड्रग के आपको इंटरेक्शन होना ही. देयर इज नो केमिकल, देयर इज नो फिजिकल एक्शन, यू कैन एक्सपेक्ट बाय गिविंग होम्योपैथिक मेडिसिन पोटेंटाइज्ड फॉर्म. स्टूडेंट को समझाना है हमारे पास कोई भी ड्रग सब्सटेंस है, यू कैन, आपका फिजिकल सिम्टम मिलेगा, आपको मिलेगा, आपका इनके मासिव डोज में आपको बहुत ज्यादा सिम्टम मिलेगा. बट वंस यू डायनामाइज द ड्रग यू कैन एक्सपेक्ट द एक्शन ऑफ ड्रग ओनली इन लिविंग बीइंग. आपको इंटरेक्शन होना चाहिए. वो एक्चुअली दैट्स अ पॉइंट आपने बताया, वो पॉइंट आपने एक्सप्लेन करने के लिए हमने पहले बताना था कहानी ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्टार्टिंग फ्रॉम सर्पेंट, हेलमिन्स, देन अमीबा, देन आपका बैक्टीरिया, देन वायरस, देन पार्ट ऑफ वायरस a protein molecules can also change, huge changes, then autoimmune disease. अब देखो कितनी कहां से कहां तक पहुंच गया. If you can understand this thing, then it's not difficult to explain student the role of minuteness. Starting from mass हनीमैन का मालूम है 4 grams of सिंगोना जूस ट्वाइस डेली से हम बता सही हनीमैन ने बताया in minute pillules in 50 millismol.
starting from 4 grams of mother tincture in his Singona experiment 1792. इनका 6th edition में आने टाइम बताए a single poppy seed pill is enough to make a change. If you can compare, if you can explain these two things parallelly, then student can easily understand why we are insisting them to use a minimum dose is essential to make a change in human life. Innovative therapies, regulatory complaints, ये तो स्टूडेंट्स को बताना है. जो है रिसर्च एक्टिविटीज में जाने के टाइम हम मर्जी में रिसर्च नहीं कर सकते हैं. You have to follow a standard protocol. You have to explain. You have to have some ethical responsibility, ethical commitments. You are treating, you are dealing with the human life. मैंने पहले बताया इसमें सिंसियरिटी का और आपका स्ट्रिक्ट adherence to the rule is why is important, because we are dealing with the human life. To regulate that, we have some regulatory measures. हमारा उधर है तो मालूम है क्यों कोई न्यू ड्रग्स इंट्रोड्यूस करने के लिए कोई फॉर्मेलिटी है. और आपका मैंने बताया लिमिटेशन बताया, कोई कॉम्बिनेशन ड्रग्स का लिमिटेशन भी बताया. तो रेगुलेटरी कंप्लेंट्स का किसी जगह में जरूर है, किसी जगह में और स्ट्रिंजेंट चाहिए. दो है, फॉर इंट्रोड्यूसिंग न्यू ड्रग्स and for making combination the law should be more stringent, otherwise there is a malpractice and there is a chance of violation of the general principles of ethics in homeopathy pharmacy. So there should be a standard form, CTR registration है, CCRH, HPL, that you have to follow. Then medical chemistry अंदर field है, different synthesis में बताया कोई नया ड्रग्स का, like botany बताया न्यू ब्रांच है medicinal chemistry. Drug discovery and development, both chemistry and pharmacy. Drug discovery में बताया that's a 100% research activity है. न्यू ड्रग्स का रोल है. मैं क्यों बताया इसी में वो स्ट्रिक्ट होना चाहिए, वो साइंटिफिक होना चाहिए. आजकल भी हमारे पास, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीबॉडी, वी आर आल्सो पार्ट ऑफ दैट. अभी हमारे पास बहुत ज्यादा नए नए ड्रग्स इंट्रोड्यूस होते हैं. बट इवन नाउ मोस्ट ऑफ अस आर प्रिस्क्राइबिंग ओल्ड ड्रग्स विदाउट एनी डाउट. आपका मालूम है बेल्डोना का, ब्रायोनिया का और रस्टॉक्स का कोई सिम्टम है तो बोरिक मेटेरियमेटिक, ग्लास मेटेरियमेटिक देखो, उसी में आपको लिखा है, आपको केन्स प्रॉपर्टी में देखा, आपका मालूम है देयर इज नो डाउट दिस मेडिसिन विल वर्क. व्हाई? ह्यूज क्वेश्चन व्हाई. मैं पहले आंसर बताया, दैट ट्रस्टवर्थी था. मैं बताया वो एंटी क्लॉकवाइज